वेलकम फ्रेंड्स। हम भारत के लोग शासक हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द रूलर्स। वेलकम टू HBKLDAXA। HBKL स्टैंड्स फॉर हम भारत के लोग और DAXA स्टैंड्स फॉर डॉक्टर अंबेडकर एक्सलेंस अवार्ड्स, DAXA दक्ष। So welcome to HBKL DAXA on the occasion of 15th August, that is Independence Day of India. So आज का हमारा जो क्वेश्चन है या टॉपिक है वो है Why we the people of India must daily recite preamble, यानी कि हम भारत के लोगों द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका का रोज़ाना उच्चारण क्यों किया जाना चाहिए। ठीक है, तो रीज़न नंबर 1, because preamble is a declaration by we the people of India that the constitution is supreme. So our question was why we the people of India must daily recite preamble, and the reason number 1 for this is because preamble is a declaration by we the people of India that the constitution is supreme. Right? So what is our question? Why we the people of India must daily recite preamble? So here is the reason number 2. The reason number 2 why we the people of India must daily recite preamble, because it is a resolution by we the people of India that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So this is reason number 2, that preamble is a resolution by we the people of India that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Correct? Reason number 3, because preamble is a resolution by we the people of India to secure fundamental rights to justice, liberty and equality to all its citizens. So the reason number 3 why we the people of India must daily recite preamble is that preamble is a resolution by we the people of India to secure fundamental rights to justice, liberty and equality to all its citizens. So let's explain the fundamental rights. So to secure fundamental rights to justice, so justice are of 3 types: social, economic and political. Right? So justice are of 3 types: social, economic and political. To secure fundamental right to liberty of thought, expression, belief, faith and worship. To secure fundamental right to liberty of thought, expression, belief, faith and worship. To secure fundamental right to equality of status and of opportunity to all its citizens. So fundamental right to equality of status and opportunity to all its citizens. Why we the people of India must daily recite preamble? Here is reason number 4, because preamble is a resolution by we the people of India to promote fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Please note the word fraternity and the dignity of the individual. Right? So fraternity and the dignity of the individual along with the unity and integrity of the nation. So this is reason number 4. So we have stated 4 reasons why we the people of India must daily recite preamble. Hence the mission is preamble in every mind and preamble on every wall. So what is the mission? Preamble in every mind, preamble on every wall. So our mission is to establish this, that every Indian must have preamble in its mind, in his mind, his or her mind,
and every wall in India must have preamble displayed on it. राइट, हर दिमाग में प्रियम्बल जो है वो बैठा हो या समझा दिया गया हो या उसको याद हो, उसको समझ हो प्रियम्बल की, ठीक है, और हर दीवार पर प्रियम्बल जो है वो लिखा हुआ प्रदर्शित किया जाए या डिस्प्ले किया जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा मिशन के लिए? मेक इट कंपलसरी टू डेली रिसाइट प्रियम्बल। अब कहाँ कहाँ पे इसको डेली रिसाइट करवाया जाना चाहिए? इन एवरी स्कूल, कॉलेज एट्सेट्रा, मतलब हर स्कूल और कॉलेज में प्रियम्बल को डेली रिसाइट करवाया जाने का एक नियम बनाया जाना चाहिए। डेली रिसाइट प्रियम्बल इन पार्लियामेंट एंड इन एवरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट? सो मेक इट कंपलसरी टू डेली रिसाइट प्रियम्बल इन पार्लियामेंट and in every state legislative assembly. Daily recite preamble in all courts like Supreme Court, High Court, District Court or Sessions Courts, etc. Daily recite preamble in every army, police or public or government assemblies, right? Daily recite preamble in all public, police, army offices, etc. Make it compulsory to recite preamble on 26th January, 15th August, 26th November, 14th April, etc. We, the people of India, must compulsorily recite the preamble to the Constitution of India in every public protest. This is very important. This we must make a practice, right? We, the people of India, must compulsorily recite the preamble to the Constitution of India in every public protest. मतलब हर public protest में हमें preamble to the Constitution of India को डेली रिसाइट किया जाना चाहिए। मतलब हमें ये नियम बना लेना चाहिए कि जो भी पब्लिक प्रोटेस्ट हम करेंगे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी कंपल्सरीली रिसाइटेड इन एवरी पब्लिक प्रोटेस्ट। करेक्ट? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ये मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप प्रोटेस्ट करें उसमें आप प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नेसेसरीली रिसाइट करें। तो मैं इस पूरे पॉइंट को दोबारा से पढ़ूंगा। वी, द पीपल ऑफ इंडिया, मस्ट कंपल्सरीली रिसाइट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन एवरी पब्लिक प्रोटेस्ट। प्रियम्बल ऑन एवरी वॉल, ये है सेकेंड पार्ट ऑफ द मिशन, राइट? तो हैंग प्रियम्बल ऑन एवरी वॉल ऑफ एवरी क्लासरूम or every assembly place of every school. Hang preamble on every wall of every educational institution, etc. Hang preamble on every wall of every public police office, courts, etc. Hang preamble on every wall of every public place like hospital, platform, bus depot, markets, etc. जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। हम भारत के लोग शासक हैं। वी, द पीपल ऑफ इंडिया, आर द रूलर्स। DAXA, दक्ष, डॉक्टर अंबेडकर एक्सलेंस अवार्ड्स। थैंक यू।